Hello friends, welcome back to the series of lecture. I am Advocate Gaurav Singh Adana. This is the 52nd lecture of this series of CRPC, and we are continuing with the topic complaint proceedings. So write down the name of a case. It is related to the previous topic where we had completed in the last lecture. That is when the judicial magistrate would consider to be taken cognizance. State of West Bengal versus Bijoy Kumar Ghosh, 1978 Supreme Court. Then another case, Gopal Singh Sindhi versus State of Assam, 1961 Supreme Court. This Gopal Singh Sindhi is a three judges bench, and the judgment was delivered by S.J. Imam Justice. It was held that the cognizance in a complaint case is taken the moment the judicial magistrate, upon applying his mind to the complaint and the document attached to it, to take further proceedings. The moment the judicial magistrate passes the order of section 200, it is said that he has taken cognizance. However, if upon receiving the complaint, the judicial magistrate pass an order of investigation without the order of section 200, it will be a case of pre-cognizance order under section 156 clause 3 or 155 clause 2, and it will be said that the judicial magistrate has not taken cognizance. The order of an investigation can also be passed under section 202, but that will be done only after the stage of section 200. अब काफ़ी लोग जो कोर्ट जाते हैं या मजिस्ट्रेट या किसी एडवोकेट से हम अगर पूछते हैं कि व्हेन द कॉग्निजेंस हैज टेकन टू बी कंसिडर्ड, कब माना जाएगा कि कॉग्निजेंस लिया गया है, तो वो बोलेंगे कि द कॉग्निजेंस मस्ट बी कंसिडर्ड टू बी टेकन आफ्टर द इशू ऑफ प्रोसेस हैज डन. But you must appreciate that this is where the complaint of 191 clause A is filed. 190 clause 1 clause A complaint is filed. This is where. After that it is the complaint proceedings of chapter 15. इसके बाद complaint proceedings होंगे after filing the complaint. That is of section 200, 202, etc. And after that somewhere here either it is a dismissal of complaint under section 203 or it is a case of issue of process. Now if अगर किसी से पूछें वकील वगैरह से प्रैक्टिकली, तो कोर्ट में बताएंगे कि इशू ऑफ प्रोसेस यहाँ पर होता है. इट इज अ कन्वेंशन इन विच दे आर टेलिंग, बट दैट इज टेक्निकली रॉन्ग आंसर. कॉग्निजेंस हमेशा यहाँ पर होगा. जैसे ही मजिस्ट्रेट ने 200 का प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर कर दिया यहाँ पर, जैसे ही मजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स द कंप्लेनेंट टू अपीयर before the court for the examination on oath under section, obviously that is under section 200. So जैसे ही मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा विटनेस को, कंप्लेनेंट को, the cognizance of offense would take here itself. So हम कोर्टों में देखते हैं कि इशू ऑफ प्रोसेस पर कॉग्निजेंस लिया माना जाता है, बट सुप्रीम कोर्ट का व्यू हमेशा ये है कि द कॉग्निजेंस वुड बी टेकन द मोमेंट द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 200 वुड बी पास. So when we harmonize both of them, तो ये कह सकते हैं cognizance with respect to accused taken here and cognizance with respect to offense done here when the proceedings of 200 starts. But technically देखें तो ये भी गलत है. Cognizance was taken actually here only at this point. So write down, technically the cognizance of offense is taken under section 200, whereas the cognizance of the offense with respect to that particular accused can be said to have been taken at the stage of issue of process. So this is about the taking cognizance. Taking cognizance का एक टॉपिक था, that is over. So ये तो था हमारा कंप्लेंट केस में. इसी प्रकार से हमारा FIR केस में जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, वेदर इट इज अ क्लोजर रिपोर्ट और चार्जशीट, जैसा कि RUC केस में हुआ था,
तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, डिसाइड किया था दैट द कॉग्निजेंस इज प्रॉपर, क्योंकि उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी. फॉर दैट द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द कॉग्निजेंस इज प्रॉपर, बिकॉज पुलिस रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट स्टेज इज कॉग्निजेंस. Similarly, in the complaint cases, next stage is cognizance. So, similarly, in complaint case, when the magistrate passes the order of section 200, it is said that taking cognizance. That is why they are writing taking cognizance. So, that's it about the topic taking cognizance. Now, the next topic is guidelines with respect to examination of section 200. एग्जामिनेशन जो सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन होता है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस. द एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी. फर्स्ट गाइडलाइन इज द एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी एक्सेप्टिंग इन द केसेस ऑफ प्रोवाइजो. प्रोवाइजो का बाद में देखेंगे. द एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी एक्सेप्टिंग इन द केसेस ऑफ प्रोवाइजो, दैट इज इफ ए प्राइवेट कंप्लेनेंट has been filed or a complaint has been filed by a court or a public servant in his private capacity, then the examination of the complainant and the witnesses in section 200 is mandatory. It has to be a proper and oral examination. Second guideline. It has to be a proper and oral examination in the court, and the examination has to be reduced into writing. The complainant or witness cannot submit his examination in a written form. Rather, he has to appear personally in the court and he has to answer the question asked by the judicial magistrate orally. Third guideline is the examination shall be done in question answer form, and the court or judicial magistrate at the time of examination can ask questions which are in the nature of cross examination. क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे कि सवाल सच्चाई जानने के लिए कोर्ट पूछ सकता है. सो कोर्ट कैन आस्क क्वेश्चंस विच आर इन द नेचर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. नाउ द फोर्थ पॉइंट. द एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन 200 कैन नॉट बी सेड टू बी either examination in chief or cross examination. Rather, these statements are not admissible at the trial stage as a substantive piece of evidence. The complainant and the witnesses will rather again have to appear in the court, and the examination of section 200 can be used for corroboration, contradiction, etc. Fifth point. The accused is not at all involved at this stage, as issue of process is not made against him at this stage, and therefore the accused cannot participate in the proceedings. Sixth point. The examination has to be done by judicial magistrate himself, and therefore if lawyer examine the complainant and the witnesses, it will be an irregularity. However, if the lawyer conducted the examination in the presence of judicial magistrate, then it is a curable irregularity under section 465. तो curable irregularity का मतलब क्या है? फेलियर ऑफ जस्टिस एग्जामिन करना पड़ेगा, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है कि नहीं. एंड if did so in the absence of judicial magistrate, then it is a incurable irregularity. Now the seventh point. If the record of the examination is not signed, record of the examination जो examination हुआ is not signed by the complainant, witnesses, it called an incurable irregularity. So whenever the examination is not signed by the complainant or witness, it is an incurable irregularity. Incurable irregularity what? Incurable means what? It means 465 में एग्जामिन करने की भी जरूरत नहीं है. The justice has been failed. इसमें प्रिजम्पशन होगा कि जस्टिस फेल हो गया. तो जहाँ पे भी बोलेंगे इनक्योरेबल तो 465 में एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है. इट इज प्रिजम्पशन द जस्टिस हैज बीन फेल्ड. और जहाँ पे भी बोलेंगे क्यूरेबल तो 465 में एग्जामिन करेंगे whether the justice is failed or not. Now the 8th point is there can be a joint complaint filed by 2 or more complainant. तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. सिंगल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मिलकर. अलग अलग कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है. अगर उसी केस में कंप्लेंट फाइल करना है तो सारे के सारे मिलकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. उन सब का सिग्नेचर होगा कंप्लेंट में.
So it will be a single complaint and all of them will be signing it. So there can be a joint complaint filed by two or more complainants. So next point, ninth, the judicial magistrate shall not cause any unreasonable delay in the examination of complainant and his witnesses. 10th point, if an unreasonable and unexplained delay is caused, then the High Court can interfere under section 482. So High Court order कर सकता है to speed up the proceedings. Now the next point, 11th point is the judicial magistrate cannot refuse to take cognizance only on the ground that the earlier in the same case the police officer upon investigation had filed a closure report. अब मान लो कि एक ऑफेंस हुआ है, अब उसमें कोई एफआईआर आया और एफआईआर के बाद पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया and the magistrate is not taking cognizance. And now for the same offense the complaint is filed either through the protest petition or separately. So now अब केवल इस ग्राउंड पे कि पहले क्लोजर रिपोर्ट लगा था उस केस में, तो मजिस्ट्रेट कैन नॉट रिफ्यूज द कंप्लेंट. मजिस्ट्रेट कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस ऑन दैट कंप्लेंट. बट अगर डॉक्यूमेंट्स को देखकर लगता है दैट इज देयर इज नो प्रिमा फेसाई केस, देन ऑन दैट कैन रिफ्यूज द कंप्लेंट. The refusal to take cognizance, no doubts, can always be made on the ground of there not being any prima facie case on the basis of the complaint and the document attached with the complaint. Point 12. A sarpanch etc. is a public servant, will be a public servant for the purpose of the proviso. जैसे पुलिस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट होगा, उसी प्रकार से सरपंच, मुखिया एक्सेट्रा इनको पब्लिक सर्वेंट मानेंगे. बट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 200 इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट. ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइजो. वैसे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारा पब्लिक सर्वेंट है, बट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 200 प्रोवाइजो इट इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि उसका काम कंप्लेंट फाइल करना नहीं है. Police officer could be a public servant for this proviso. Court could be a public servant, but court को public servant में ना रखें क्योंकि अलग से proviso में लिखा है court को. So अगर कोर्ट कंप्लेंट करे, सरपंच मुखिया कंप्लेंट करे, पुलिस ऑफिसर करे, आईएएस वगैरह कोई करे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कंप्लेंट करे, that would be considered to be a public servant for the proviso. Now the last point is, if the judicial magistrate dismisses the complaint without examining the complainant, it is an incurable irregularity. But if he issued process without examining the complainant, then it is curable irregularity. अब देखिए, जो कंप्लेंट है उसके डॉक्यूमेंट हैं. मजिस्ट्रेट का क्या काम है? पहले कंप्लेनेंट को एग्जामिन करो, फिर डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करो, देन ही वुड डिसाइड. मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट को एग्जामिन नहीं किया, फिर डॉक्यूमेंट को भी एग्जामिन नहीं किया और इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया. सपोज ही फाउंड डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट और इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया, या फिर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा मजिस्ट्रेट ने, और कंप्लेनेंट को एग्जामिन नहीं किया, डिसमिस कर दिया कंप्लेंट को. सो हियर इन डिसमिसल केस, इन द केस ऑफ डिसमिसल, पहले कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना चाहिए था, और अगर मजिस्ट्रेट ने नहीं किया देन इट इज ए इनक्योरेबल इरेगुलरिटी. हाँ, अगर इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया, इफ द डॉक्यूमेंट्स आर सफिशिएंट, देन इट इज नॉट इनक्योरेबल. The failure of justice could be examined under section 465 if the issue of process is directly done without examining the complainant. So that is called curable irregularity. Now let's see next paragraph. If the complainant was examined but the witnesses were not, complainant examine हो गया but witnesses examine नहीं हुए, and the complaint was dismissed, then it is incurable irregularity. But if issue of process was done, then it is curable irregularity. So in one sentence, if the complainant not examined and या फिर
complainant examine but the witness is not examine. कंप्लेनेंट एग्जामिन कर लिया, विटनेसेस एग्जामिन नहीं किए, या फिर कंप्लेनेंट ही एग्जामिन नहीं किया और विटनेसेस भी एग्जामिन नहीं किए, उस केस में अगर इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया तो देन इट इज क्योरेबल। बट अगर कंप्लेंट डिसमिस कर दिया देन इट इज इनक्योरेबल। कंप्लेनेंट एग्जामिन कर लिया, विटनेस एग्जामिन नहीं किया, कंप्लेंट डिसमिस कर दिया देन इट इज इनक्योरेबल। कंप्लेनेंट ही एग्जामिन नहीं किया और कंप्लेंट डिसमिस कर दी देन ऑल्सो इनक्योरेबल। Now let's write about the proviso. As per to the proviso of section 200, there are two cases in which the judicial magistrate need not examine the complainant and his witnesses. Where the complainant, first one, where the complaint has been filed by a public servant, जहाँ पे complaint file की गई है by a public servant or by a court while performing its official duties. और वो कब की गई है फाइल complaint? by public servant or court के द्वारा while performing its official duties. The public servant can file a complaint in reference to section 172 till 188 of the IPC. Read with section 195 clause 1 clause A of CRPC. And the court can file a complaint in reference to section 193 till 229A. Read with section 195 clause 1 clause B of the CRPC. ओके, तो ये इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार। एंड इन द केस ऑफ सेक्शन 193 आईपीसी इट हैज टू बी रीड विद सेक्शन 340 सीआरपीसी एज वेल। ओके, तो ये पर्टिकुलर, जैसे इसमें से पर्टिकुलर पूछ लिया कि किस रेफरेंस में किस सेक्शन से आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया था किस सेक्शन से किस सेक्शन तक इंटरव्यू कोर्ट फाइल कर सकता है कंप्लेंट। ओके, so in the above cases, now the next paragraph, after read with section 195 1b of the CRPC and in the cases 193 IPC it has to read with section 340 of CRPC as well. In the above cases, the judicial magistrate is free not to examine the witnesses and a complainant, though if he so desires he can examine them. तो वो फ्री है मजिस्ट्रेट उनको एग्जामिन ना करे, बट अगर वो चाहे तो एग्जामिन कर सकता है। वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बता भी चुका हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको दोबारा देखेंगे डिटेल में। फॉर नाउ राइट डाउन ओनली द सेकंड पॉइंट इज द केसेस वेयर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर कॉग्निजेबल मेक ओवर आफ्टर कॉग्निजेंस। The cases where a judicial magistrate after cognizance makes over the case to the other judicial magistrate under section 192 of CRPC. He is free not to examine the complainant and the witnesses, though if he so desires he can examine them. अगर वो चाहे तो एग्जामिन कर सकता है, बट वो फ्री है not to examine them. The judicial magistrate to whom the making over is made, he shall examine the complainant and witnesses if earlier judicial magistrate not examined them, but if the earlier judicial magistrate already examined them, then he need not examine the complainant and witnesses. तो अगर earlier judicial magistrate ने एक बार अगर एग्जामिन कर लिया है, then he need not examine the complainant and witnesses. So there are one or two points in this proviso also to explain. Earlier also I had explained them, but in the next lecture we would continue and see these 2 points in detail. So by these 2 points we would complete the section 200. After that we would see section 202 in the next lecture. So thank you guys for watching this lecture.